Good afternoon, everyone. My name is Nikhil Verma, and today we are going to discuss about the lecture of artificial intelligence in governance. So, before starting about the artificial intelligence concept of artificial intelligence, you should know about the basic details of the governance. What do you mean by the governance? Example. Let's focus upon slide के format में करते हैं हम लोग. See this thing. Here it is. Let's draw two circles. Okay. This is, we can say, government. Okay. And this larger circle is governance. So basically we can say that governance is anything which is like, अगर कोई पॉलिसीज बन रही हैं, लॉज बन रहे हैं, ठीक है, वो कैसे सिटीजन को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हाउ द सिटीजंस आर एबल टू कन्वे देयर आइडियाज, हाउ द सिटीजंस आर एबल टू कम्युनिकेट विद द गवर्नमेंट, दैट ऑल कम्स अंडर द पिक्चर ऑफ गवर्नेंस. ओके, बट दैट डजंट आल्सो मीन्स कि गवर्नेंस है वो सिर्फ गवर्नमेंट से ही होती है. गवर्नेंस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, सिविल सोसाइटीज, ओके, वी कैन से एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे भी होती है. So it's not just limited to the concept of government also, okay. But somewhere or other, just understand this thing, that governance is majorly focusing upon how the rules, how the laws, okay, how the legislations are applicable to the normal people or the citizen at general or at large, okay. So basically we can say that government is a small subset of that part of the governance, okay. Governance is a way bigger thing, alright. It includes NGOs, civil societies, okay, extra governmental organizations also, like private organization, okay, extra governmental organization, or I'll say a better example of that, if you have covered in the ethics also, okay, that is more about the CSR, okay, corporate social responsibilities, ठीक है. अब जैसे the governance part also, there are like, it will gonna cover it in the two major examination. One in the GS2 also and one in the GS4 also. Whenever we are talking about the role of civil society, role of NGOs, role of we can say the extra governmental organization, then we are talking about the governance part, which is covered under the GS4. If you are talking about the political issues, governmental issues, constitutional issues, then that comes under the part of the GS2, or we can say polity वाला paper. Okay, polity के अंदर ही governance वाला part है. तो majorly हमें ये focus करना है कि governance के आज के time पे, ठीक है, क्या क्या issues आ रहे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, गवर्नेंस किन किन चीज़ों को एनकम्पास करता है, विच आर द कंसेप्ट्स दैट आर डायरेक्टली अंडर द वी कैन से टॉपिक ऑफ गवर्नेंस, ओके, और एआई का क्या यूज हो सकता है गवर्नेंस के अंदर, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन अफेक्ट द गवर्नेंस वाला पार्ट. लेट्स सी दिस थिंग. What do you mean by artificial intelligence? That is a very basic thing. Because we have already discussed about the governance part, we should also cover the artificial intelligence. What does it mean? एक्चुअली में होता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बेसिकली सब लोगों ने यही सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है, या फिर एक एग्जांपल के फॉर्म में करते हैं, ठीक है. वी शुड टेक द एग्जांपल ऑफ अ टेस्ला कार. आई होप एवरीवन हर्ड अबाउट इट दिस, ठीक है. टेस्ला कार है. कार के अंदर क्या फीचर्स हैं? अपने आप ऑटो ब्रेक लॉकिंग सिस्टम होते हैं, एक्सीडेंट प्रॉन कार नहीं होगी. जैसे ही सपोज इफ अ ड्राइवर फॉल्स asleep while driving the car, ठीक है, अपने आप जब सामने कोई गाड़ी आएगी, अलार्म सिस्टम विल गोना एक्टिवेट. समवेयर डाउन द लाइन, व्हाट डज द मशीन इज डूइंग? Machine is imitating the kind of we can say movements or kind of actions which is performed by a human. I hope you got the point. ठीक है. Let's read the definition. It refers to the ability of machines to perform cognitive tasks like thinking, perceiving, learning, problem solving and decision making that all have been done by the human itself. तो humans कौन से टास्क कर रहे हैं और उनको machines कितने अच्छे तरीके से कर पा रही है, that is all about the artificial intelligence. In today's lecture we will gonna learn the detail about this chapter कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नेंस के अंदर क्या क्या रोल हो सकता है, ओके, हाउ इट कैन बी वेरी मच यूजफुल, हाउ इट कैन बी वेरी मच हार्मफुल टू अस, ठीक है. सो वी कैन से इट्स अ वेरी फेमस स्टेटमेंट ऑल्सो दैट वी कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ डबल एज स्वॉर्ड. इट्स योर यूज, दैट हाउ यू आर एबल टू यूज इट, हाउ यू आर एबल टू यूज इट फॉर द ह्यूमन, फॉर द बेस्ट ऑफ द ह्यूमन, वी कैन से बेटरमेंट, और इट कैन बी अ boon or it can be a pain. It can also be a very we can say harmful thing for us, ठीक है. If you are talking about the harmful thing, let me give you a very fine example of that big Cambridge Analytica incident. Big data companies, Cambridge Analytica incident, Facebook incident. You have all heard about this thing. कि somewhere down the line, artificial intelligence या data technology is a threat to somewhere down the line our privacy concerns and other things also. Let's discuss in the detail in the next slides.
See this thing? It describes the action of machine accomplishing tasks that have historically required human intelligence. It includes technologies like machine learning, pattern recognition, big data, neural networks, and self algorithms. Okay, I hope the definition is self-explanatory itself. See, what do you mean by artificial intelligence in governance? What are the areas to cover upon? Okay, how it can help in the governance, how it can help in the improvement of the governance, that how the government can function effectively, okay, through with the help of artificial intelligence. In healthcare, we can say customer records. There are a number of hospitals, there are a number of private hospitals, there are a number of government hospitals. We have a huge population which are suffering from some or other diseases. We can maintain a good track record, or we can maintain a good recording data, record data of every kind of a customer, of every kind of patient history, previous history, as well as the current medication, all of the things. We can use it in a very effective manner. So in that application, AI can play a very effective role. Got it? Next, see this land reforms के अंदर, ठीक है, digitalization of land records. It is a very major issue in our right now the land sector of our India. ठीक है, इकोनॉमिक्स में अगर आप लोग पढ़ोगे तो लैंड सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा मेजर इशू यही है कि लैंड रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन नहीं है. ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है. गॉट इट? अगर लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज होंगे तो समवेयर डाउन द लाइन तहसीलदार बीट रजिस्ट्रार बीट द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू वी कैन से द ऑफिसर्स, ठीक है, बीट पटवारी एंड अदर वी कैन से गवर्नमेंट फंक्शनरीज, एट द एंड ऑफ द डे दे विल गोना बी वी कैन से उनकी हेल्प के लिए और या उनकी बेटरमेंट के लिए एक लैंड जो रूरल सोसाइटी है उसकी बेटरमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है अगर लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटल हो सकते हैं. ठीक है, इट इज जस्ट वन ऑफ द स्टेप. ठीक है, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प देम अ लॉट. ठीक है, सिमिलरली इन एग्रीकल्चर ऑल्सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो अबाउट एग्रीकल्चर. इन एग्रीकल्चर ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट दिस थिंग दैट हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ ड्रोन, okay, with the help of other technologies we can use that thing. Okay, field surveys are there, crop profiles are there, soil profiles are there. Okay, we can help them a lot. Okay, agriculture में artificial intelligence का बहुत ज़्यादा help हो सकता है. Got it? Which kind of a crop is suitable for which kind of a soil? These all other activities which can be done by the artificial intelligence or robotics itself. Got it? Even if you're gonna take the example of Israel, we are right now also have signed multiple agreements, multiple memorandum of understanding also with the country of Israel. With respect to the agriculture itself, they are using different kind of methods. With respect to the somewhere down the line, उन लोगों का scientific innovation इतना अच्छा खासा है जिसकी वजह से हम लोगों को help मिल रहा है. Drip irrigation, sprinkler irrigation, it's a normal technique somewhere down the line, but somewhere down the line they have evolved through the different kind of a machine learning, different kind of a introduction of we can say artificial intelligence, different kind of introduction of innovation or technology in the field of agriculture. Seedless irrigation is seedless farming is there. So all these things somewhere down the line they are helping us in improving our agriculture. तो इसराइल की हम लोग हेल्प ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक इनोवेशंस, रिसर्च और डेवलपमेंट में हम लोग हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिटरमाइनिंग द एनपीके फॉर पर्टिकुलर सॉइल प्रोफाइल, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्या उत्तर प्रदेश की सॉइल को ही एनपीके सेम चाहिए? क्या वेस्ट बंगाल को भी सेम चाहिए? पंजाब को भी सेम चाहिए? सिमिलरली क्या महाराष्ट्र को भी किस तरीके का प्रोफाइल चाहिए? इट शुड बी सूटेबल. वो एक पर्टिकुलर सॉइल की टेरिटरी के हिसाब से वो प्रोफाइल डिटरमाइन होना चाहिए. मशीन लर्निंग and the artificial intelligence can help us a lot in all these things. Okay, next see this AI in GRM. GRM means grievance redressal mechanism. Got it? So grievance redressal mechanism के अंदर AI बहुत help कर सकता है. How the citizens are we can say giving the feedback, giving the we can say about the complaints of their policies implementation. जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन है, पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन के बाद कैसे वो अपनी कंप्लेंट्स रख पा रहे हैं, कैसे वो अपने सजेशंस रख पा रहे हैं, कैसे वो अपने व्यूज रख पा रहे हैं, और द रिकमेंडेशन एज वेल एज द रिव्यूज टू द गवर्नमेंट, इट मैटर्स अ लॉट. Artificial intelligence can streamline those processes. They can create a portal where we can say citizens can present their opinions about different kind of schemes, different kind of government initiatives. One such example is My Government. Okay, My Government Forum. I hope you have heard about this thing. There is an initiative by the Pradhan Mantri Modi regime. Okay, so they have they've also created a platform in which somewhere down the line, जिस भी सिटीजन ऑफ इंडिया को लग रहा है कि इस पॉलिसी में ये इशू है, ये एक पब्लिक डिबेट है, या पब्लिक फोरम में वो अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हैं, दे कैन यूज दैट प्लेटफॉर्म. सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ एआई वी कैन डेवलप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस थिंग. ओके, नेक्स्ट सी दिस थिंग, एआई इन ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंट एन एरिया वेयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद द हेल्प ऑफ टेस्ला. Okay, Tesla is also developing trucks. The trucks are, we can say, accident-free trucks. Okay, these technologies are also been right now they being in partnership with the Indian government also, so that जितने भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट से ट्रक हैं जो ये रोड सेफ्टी के इश्यूज होते हैं, उन सब चीज़ों को समवेयर डाउन द लाइन एक सर्टन एक्सटेंट तक रिड्यूस कर सके. तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प हो सकता है. ठीक है, वेदर इट्स अगर जितने भी हम लोग अगर इफ एनीवन ड्राइव्स कार के टायर के अंदर प्रेशर कम है, ठीक है, इंजन में कोई भी इशू है, ऑल दिस एक्टिविटीज आर डन बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ, कि वो तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर देगा, सो दैट यू कैन टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स इटसेल्फ. गॉट इट? नेक्स्ट सी दिस,
बेनिफिट्स ऑफ एआई इन गवर्नेंस, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, बेनिफिट्स क्या है? एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, राइट, ऑब्वियसली एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी. The less number of the accidents will gonna take place, the more efficiency will gonna increase. Okay, the more we can say the lesser the percentage of the error, the more efficiency, the more efficient persons, the more efficient government organization will gonna become. Okay, next see this data driven policy making, that is very much important. Data driven policy making, understand this thing, data driven. When you are doing any kind of a survey, when you're doing any kind of a, we can say, statistical study of any kind of particular topic or any kind of a government initiative, you are preparing a certain data which cannot be handled by a human itself. So we need machines in that thing. So machines can play a huge and a very efficient and an effective role in the process of data making, in the process of policy making, which is driven by the data. जिसकी एम्पेरिकल स्टडी होगी वो चीज बहुत अच्छी बनेगी, वेदर इट्स अ पॉलिसी, वेदर इट्स अ प्रोग्राम, वेदर इट्स अ इनिशिएटिव, एज सिंपल एज दैट. ओके, नेक्स्ट सी दिस थिंग, एनहांस पब्लिक सर्विस. ऑब्वियसली पब्लिक से जो एक गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा. ओके, पब्लिक ग्रीवेंसेस तो मैंने आप लोगों को पहले स्लाइड में डिस्कस कर ही दिया था. ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन को स्मूथ बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए, एप्ट बनाने के लिए एआई बहुत हेल्प कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉड डिटेक्शन. ऑब्वियसली where humans fail, let me give you a very good example about this thing. Truecaller app is everywhere. हर एक के फोन में Truecaller app आता है. ठीक है, what does the Truecaller app do? If any fraud or if any scam call is okay, if any fraudster is calling to your phone, if any spammer is calling to your phone, they will gonna automatically detect that number and put it in the spam category, so that you will be get aware of that thing. Okay, अब तुम conscious हो जाओगे, तुम उससे उसी तरीके से बात करोगे, or either you will gonna cut the call or put it in the block list. So somewhere down the line, this is a very good initiative from the field of artificial intelligence towards the citizen-centric administration, so that citizens can be remain safely. तो law and order help करेगा, law and order help maintain करने में help करेगा, cyber crime कम करेगा. I hope you got the point. Next, see this point. Proactive, predictive analysis. AI can forecast trends and anticipate potential issues, allowing policymakers to proactively address the challenges such as infra needs or public health crisis. That is very much important thing. If you're gonna look upon the cyclones, to tsunamis and all these things, यहाँ पर सब जगह पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा रखे होते हैं. दैट इज विद द हेल्प ऑफ एआई, पीपल और द साइंटिस्ट कैन प्रिडिक्ट दैट द अर्थक्वेक विल गोना कम इन 4 hours, दैट द tsunamis will gonna come in the next, we can say 2 hours or 3 hours or like 12 hours or 24 hours. अर्ली फोरकास्टिंग सिस्टम और अर्ली वार्निंग सिस्टम और वे कैन से बहुत हेल्प कर रहे हैं जितने भी जो भी एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हो गए, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, उन लोगों को. ठीक है, अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत स्ट्रांगली रोल प्ले कर रहा है और बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव भी हो रहा है. ठीक है, डे बाय डे. ठीक है, ये इंप्रूव भी किया जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी को इंप्रूव भी किया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी पे वर्क किया जा रहा है. ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी तो हमारा ह्यूमन जो लॉस हो रहा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, सोशल लॉस हो रहा है, वो बहुत सर्टन एक्सटेंट तक बहुत रिड्यूस हो जाएगा. देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ दैट थिंग, जहाँ पर फ्लड्स में एक्सपेक्टेड लॉस से बहुत कम लॉसेज हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. आई होप यू गॉट द पॉइंट. नेक्स्ट सी दिस थिंग, इश्यूज क्या है. अब ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर दैट एआई इज अ डबल एस वर्ड. ठीक है, इश्यूज भी ऑब्वियसली होंगे कुछ ना कुछ, राइट. तो अगर एक चीज बहुत अच्छा आपके लिए कर रही है तो समवेयर डाउन द लाइन देयर इज आल्सो अनदर, वी कैन से एप्रीहेंशन आल्सो, देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी आल्सो कि डाटा का कुछ ना कुछ गलत यूज हो भी सकता है. ठीक है, जैसे एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, वी यूज इट दैट डाटा इज द न्यू ऑयल, that how the oil is so much, ठीक है, expensive also, it is very much important also, it's a limited resource. Similarly data is also the same thing. Oil का use करके, let's not focus upon the example of oil, let's focus upon the example of the data, that how the data can be manipulated, can be used in an illegal manner, can be used or can be accessed in a very bad manner which can affect the human society at all at a large place. Okay, so see this thing कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं हमारे यहाँ पर. एक तो फर्स्ट तो सबसे मोस्ट और मेजर इशू, फॉरमोस्ट मेजर इशू, दैट इज कॉम्प्रोमाइजिंग प्राइवेसी. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द पुट्टास्वामी जजमेंट in the year 2018 Supreme Court judgment about the right to privacy, that somewhere down the line the government or the private organization are not entitled to use your any kind of a digital data with respect to their purposes without your consent. I hope you got the point. ठीक है, कि अपना डाटा या अपनी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते, या मतलब सॉरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं कर सकता हमारे कंसेंट के बिना. बिकॉज मिस यूज ऑफ डाटा, सपोज योर डाटा इज गिवन टू द स्कैमर्स, टू द फ्रॉडस्टर्स, टू द वी कैन से डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर. आपके फोन पे आपके नाम पे कोई नंबर रजिस्टर्ड है, वो कल को आपने बंद नहीं करवाया और आपका फोन चोरी हो गया. ठीक है, इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अ क्राइम, इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अ क्राइम अगेंस्ट द नेशनल, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी. Who will be responsible? You will be held responsible, not the other person. Got the point? So your data is very much important. Even the digital footprint. That is why the
concept of digital footprint also thrives in the new current affairs in the domain of the governance and the domain of the artificial intelligence. ओके ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, बट बेसिकली ये समझो कि कैसे जो आपका डाटा है वो बहुत प्रीशियस चीज़ है अगर ढंग से करा जाए, ठीक है, ढंग से संभाला जाए, और अगर उसको अच्छे से नहीं संभाला जाएगा तो इट कैन बी मिस यूज इन अ वेरी वी कैन से बैडफुल वे, ठीक है, इन अ वेरी harmful way also. So see this thing, privacy का issue है, analyzing huge volumes of data, keep adapting through continuous modeling of interaction and user feedback. Thus, with the increasing use of AI, the right to privacy can be under threat due to unauthorized access to one's activity data. That is very much important. Unauthorized access to one's private data or personal data. Whenever you install any kind of application, ठीक है, उसमें क्या issue होता है? Terms and conditions accept करने पड़ते हैं. They will have the access to your galleries, to your personal documents, to your personal contact book, to your call logs. All of the things they will have access to. टिकटॉक पे भी यही बैन हुआ था ना. टिकटॉक का मेजरली इशू क्या था कि उस पे इशू ये आ रहा है कि आप लोग डाटा का मिसयूज कर रहे हो. दैट इज व्हाई इंडियन गवर्नमेंट बैंड इट. ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट. अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डाटा, व्हाट डज दैट मीन? ओके, सी दिस थिंग. नेक्स्ट इज disproportionate power and control. Technology giants are investing. Now there is very much important point. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स, बीट मेटा, ओके, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, ओके, तो ऐसी कंपनीज समवेयर डाउन द लाइन जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ठीक है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है किस चीज़ के अंदर? डाटा कंपनीज के. दे आर बिल्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाउड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेजेस वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड. अब ये मिसयूज भी हो सकता है. गॉट इट? वो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर दिया, ठीक है. और उनके पास पावर और कंट्रोल बहुत है उस डाटा के एक्सेस को, उस डाटा के स्टोरेज को. गॉट इट? एंड दैट कैन बी अ थ्रेट टू द प्रेजेंट डे गवर्नमेंट्स ऑफ एनी कंट्री. ओके, सिमिलरली जो केस हुआ था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो केस हुआ था, उस केस के अंदर भी दे हैव प्रोसीडिंग्स हुई थी मार्क जुकरबर्ग की इन द हाउस ऑफ सेनेट, ठीक है, इन द हाउस ऑफ पीपल आल्सो. उनकी प्रॉपर प्रोसीडिंग हुई थी, ठीक है, और उनसे बात की गई थी, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे दैट हाउ यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ डाटा, हाउ यू आर मैनिपुलेटिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल, ठीक है, ये में कैसे, हाउ यू मेक श्योर दैट दिस डाटा डजंट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ इलीगल पर्सन. ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट. These big players have an unmatched advantage when compared to any ambitious competitor out which there is some type of data oligarchy society. Data oligarchy society, that is very much important keyword. Okay, data oligarchy. Somewhere down the line ये लोग एक तरीके से एक अपना ही ग्रुप फॉर्म कर देंगे, ठीक है. They will gonna form a cartel on which सिर्फ इन्हीं का कंट्रोल होगा, और बाकी एक मार्केट इस तरीके की हो जाएगी जो हाईली कॉम्पिटेटिव नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो एक ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाएगी. इफ यू हैव स्टडीड अबाउट द इकोनॉमिक्स, यू शुड हैव स्टडीड अबाउट दिस काइंड ऑफ अ कांसेप्ट कि ओलिगार्की क्या होता है, ठीक है, जहां पर फ्यू ऑफ द प्लेयर्स विल गोना कंट्रोल एंटायर ऑफ द मार्केट. गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो जैसे लाइक मेटा हो गया, जस्ट लाइक अपना वी कैन से गूगल हो गया, दे विल गोना कंट्रोल ऑल ऑफ द डाटा. ओके, और यही सारा का सारा डाटा कंट्रोल कर रहे हैं, यही डाटा, दिस आर द फ्यू वेरी नंबर काउंटेबल प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल डिजिटल मार्केट जो डाटा कंट्रोल कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से. Next, see this thing. It is continuing technological unemployment. AI companies are building intelligent machines that perform the tasks typically carried out in the low-income workers. That is very much important. If you are working in a Maruti Suzuki, if you are working in automobile industry, somewhere down the line, understand this thing: the work which is carried out by a mechanic will be carried out by humans, which will be carried out by the machines itself. Humans का work अगर कोई machines कर रही है तो क्या होगा? Loss of job. Got it? और इंडिया इज अ लो इनकम, वी कैन से मिडिल इनकम कंट्री. ओके, मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर क्या है? 90% ऑफ द लेबर फोर्स, ओके, दैट इज इन द इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर के वर्क अगर मशीन्स या ऑटोमेशन या रोबोट्स करने लग जाएंगे, सो व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली मैकेनिक का वर्क करके कोई और ले लेगा, या ड्राइवरलेस कार्स आ जाएंगी, तो ड्राइवर विल गोना लूज अ जॉब, मैकेनिक विल गोना लूज अ जॉब. एज सिंपल एज दैट. देयर आर डिफरेंट सर्टेन काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज जहां पर ऑटोमेशन रिप्लेस कर सकती हैं ह्यूमंस को मतलब वो कर सकती हैं, ठीक है, उनकी जॉब को लॉस करवा सकती हैं. तो इट्स अ वेरी मतलब वी कैन से डिसएडवांटेज कह सकते हैं या इश्यूज कह सकते हैं, कंसर्न्स व्हिच कैन बी रेज्ड अगेंस्ट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द गवर्नेंस पार्ट. लैक ऑफ रेगुलेशंस, जेंडर एंड एथनिक बायस, ग्लोबल जॉब मार्केट डिस्ट्रप्शन. दैट इज वेरी मच okay. They are very good points. Lack of regulations are there. The same issue came with the cryptocurrency part also. Lack of regulation. Okay, and gender bias also. Okay, artificial intelligence in the governance part not gonna discriminate, will not gonna, we can say, understand the sensitivity of a particular gender while driving any kind of a data, while analyzing any kind of a data or any kind of a statistical study. Got it? ग्लोबल जॉब डिस्ट्रप्शन होगा बहुत स्ट्रांगली, ठीक है, ऑटोमेशन से बहुत मतलब ऑटोमेशन से भी कह सकते हैं या इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक्स से ग्लोबल जॉब डिस्ट्रप्शन हो सकता है बहुत स्ट्रांग, ठीक है.
अब इंडियन इनिशिएटिव्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नेंस? गवर्नेंस के अंदर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल टेक्नोलॉजी का या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कैसे हम लोग इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स वर केम, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स वर केम विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग, आल्सो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, आल्सो बी इट साइंस एंड टेक, बी इट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, बी इट we can say home affairs also. Different kind of portals came with the help of AI, how we can improve the technology or how we can improve the citizen centric administration. Okay, see this thing. Post 2014 में क्या आया था? न्यू इंडिया। 2017 में क्या था? संकल्प से सिद्धि। 22 में क्या है? ठीक है, न्यू इंडिया की ही बात हो रही है। न्यू इंडिया और न्यू इंडिया, इसमें 2022 के अंदर न्यू इंडिया के बारे में क्या बात हो रही है कि ये अभी जो इंडिया आया है, ठीक है, 14 के बाद जैम आया था, 22 के बाद होल अगर डिजिटलाइजेशन हुई। गॉट इट? Digital economy, we can say digital demonetization also comes under this picture. Okay, cashless economy is also come under 2022 part. Okay, और aim क्या है हमारा? सर्वश्रेष्ठ भारत by 2047. That is the logo of our digital program of whole of the governance part. कि सर्वश्रेष्ठ भारत बनना चाहिए by 2047. कि कैसे हम लोग सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, कैसे हम अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ा सकते हैं, हाउ वी कैन स्ट्रांगली पुट दैट थिंग इन द गवर्नेंस पार्ट, और इफेक्टिव गवर्नेंस से क्रिएट हो पाए। इफेक्टिव गवर्नेंस क्रिएट होगी, ठीक है, तो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज होगा, स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथन होगा, सिटीजन विल हैव अ मोर ट्रस्ट ओवर द गवर्नमेंट, ओके, एंड ओवर द सिविल सोसाइटीज ऑल्सो। और द पॉइंट, क्या क्या टेनेंट्स हैं, अब वो हम लोग पढ़ते हैं कि पीएम मोदी जी के क्या क्या टेनेंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए वो क्या कर रहे हैं। सी दिस थिंग, 4P, पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, 3S, स्किल स्केल स्पीड, ओके, पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल P मॉडल्स, देयर आर मल्टीपल मॉडल्स, ओके, बी इट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई किसी एनजीओ की हेल्प से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, दे आर केटरिंग टू द ह्यूमन नीड्स, दैट्स अ बेसिक थिंग, ओके, गवर्नेंस। स्किल स्केल स्पीड, स्किल्स एक्वायर करेंगे बट एट लार्ज स्केल, ताकि वो स्पीडी डिलीवरी ऑफ वी कैन से एफिशिएंसी हो पाए, ठीक है। एमजी स्केल क्या है? दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। एमजी स्केल इज मिनिमम गवर्नमेंट plus maximum governance is equal to good governance. This is good governance concept from the governance part itself. There is a good governance also, there is a bad governance also. Bad governance is where जहाँ पर citizens अपनी प्रॉब्लम नहीं रख पा रहे, जहाँ पर policies अच्छे से implement नहीं हो पा रही, जहाँ से legislation या rules या फिर any kind of bylaws or any kind of regulations are not properly affecting the citizens. They are somewhere down the line in a negative way affecting the citizens. ओके, उनकी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में, ह्यूमन ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट में वो दे आर नॉट प्लेइंग नथिंग काइंड ऑफ अ रोल, नो नन काइंड ऑफ अ रोल, ओके, उनका बिल्कुल निल रोल है उसके अंदर, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस यही है यार कि मिनिमम गवर्नमेंट प्लस मैक्सिमम गवर्नेंस, कैसे आपकी गुड गवर्नेंस बना सकती है, मैक्सिमम टाइम पे गवर्नेंस आपका फोकस होना चाहिए, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इट शुड कन्वर्ट फ्रॉम द रेगुलेटर टू द फैसिलिटेटर पार्ट, ओके। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो बेसिकली गवर्नेंस का यही है मेजरली इशू कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे एरियाज के अंदर लग भी सकती है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर गवर्नेंस के अंदर बहुत सारा लग भी रहा है तो उसी सिमिलरली वो बहुत सारे इश्यूज भी हैं उसके अंदर, ठीक है। और इश्यूज को सॉल्व करने के लिए द बेस्ट वे द गवर्नमेंट कैन डू इज टू हैव अ प्रॉपर रेगुलेशन, इज टू हैव अ प्रॉपर ओवरसाइट मैकेनिज्म्स, सो वे इन दैट वे जो नॉर्मल पीपल है उनको इफेक्ट ना हो, जो नॉर्मल लाइव्स है उनको इफेक्ट ना हो, ओके। थैंक यू वेरी मच।